Namaste Gurukulians. How are you beta? I hope you are fit and fine. Beta, I am Sumit and I will teach you this chapter of physics of 9th class, force and laws of motion. And according to your NCERT, this chapter is of number 9, force and laws of motion. Beta, in your first chapter you have studied rest or motion, rest and motion, object at rest, object in motion. Beta, this chapter is directly linked to that chapter. Means if you have done your first chapter conceptually very easily, comfortably, then there is no problem for you in doing this chapter also. This chapter is very easy. Okay, and this chapter has direct link to the first chapter, force and laws of motion. Beta, what do you mean by force? I think in 8th class you have studied that what is force. Can you tell me beta what is force? Listen beta, have you ever thought, क्या कभी आपने सोचा है, a car was initially at rest, a car was initially at rest, and when driver drives it, then it starts moving. Okay, car is moving. After some time driver applies the brakes, car stops. Car is moving, driver turns it left or turns it right. ओके, कितने सारे चेंज हुए. जब कार रुकी हुई थी तो चल पड़ी, चल रही थी तो रुक गई. डायरेक्शन, कार की जो मोशन की डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई. कितने सारे चेंज हो रहे हैं. ओके, तो बेटा इन सभी चेंजेस का रीज़न कौन है, कारण कौन है? फोर्स. ओके, कितने सारे चेंजेस हो गए. जहाँ भी बेटा कोई चेंज आता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्ट हुआ है ना. जहाँ पे कोई चेंज आया, कार रुकी हुई थी चल पड़ी, मूविंग कार स्टॉप्स, टर्निंग ऑफ कार. ओके, दिस ऑल आर सम चेंजेस एंड यू नो समथिंग इज देयर विच इज हेल्पिंग देम आउट टू चेंज. कुछ तो है जो उनको चेंज कर रहा है, कुछ तो है. ओके, वो जो कुछ है ना, दिस इज कॉल्ड फोर्स. Okay, final. Beta, suppose initially I was happy, now I am not happy. Suppose after 2 minutes, before 2 minutes I was happy, now I am not happy. This change is called emotionally change. But this type of change, initial car was at rest, now it is moving. Initial car was moving, now it is at rest. It is turning. ए बॉल इज़ देयर. अगर मैं किसी बॉल को प्रेस करता हूँ तो उसका साइज और शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. दीज ऑल चेंजेस आर कॉल्ड मैकेनिकल चेंजेस एंड ऑल द मैकेनिकल चेंजेस रिक्वायर फोर्स. मैकेनिकल चेंजेस बेटा तभी होते हैं जब फोर्स लगता है. तो फोर्स इज नेसेसरी फॉर मैकेनिकल चेंजेस. ओके, बहुत सारे हो सकते हैं मैकेनिकल चेंजेस. अभी मैंने बताया, रुकी हुई कार चल पड़ी, चलती हुई कार रुक गई, कार मुड़ गई. किसी बॉल के साइज़ को कम ज़्यादा, मतलब कि उसको प्रेस करते हो तो शेप और साइज दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो चेंजेस आए. दिस ऑल आर ऑफ मैकेनिकल चेंजेस एंड टू मेक द मैकेनिकल चेंजेस दिस टर्म इज रिक्वायर्ड फोर्स. नाउ बेटा टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? नाउ डेफिनेशन ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स चाहिए रुकी हुई कार को चलाने के लिए, चलती हुई कार को रोकने के लिए, कार को टर्न करने के लिए. किसी बॉल को प्रेस कर रहे हो, उसके शेप और साइज को चेंज करने के लिए क्या चाहिए आपको? फोर्स चाहिए. नाउ बेटा टेल मी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? यू नो, लिसन, इट्स डेफिनेशन वेरी सिंपल एंड यू हैव स्टडीड इन योर 8th क्लास ऑल्सो. फोर्स, इट इज जस्ट push or pull on the object. It is just push or pull on the object. The force is always in the form of push or in the form of pull. It is the only push or pull on the object. Okay, means wherever is the mechanical change is there, either push is there or pull is there, and this push or pull is called force. Okay, when suppose car was initially at rest, now it is moving, means engine is pushing the body, engine is pushing the body, means
फोर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। कार के ऊपर क्या हुआ, पुश हुआ, किसने लगाया, कार के इंजन ने लगाया। दिस मीन्स दिस इज नथिंग बट पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर। सपोज दिस इज द चौक, नाउ it is at rest, now it is moving, means something is acting on the chalk, push is acting on the chalk and car and the chalk starts moving. Clear? So it is just push or pull on the object, or you can say that it is just effect of, because force is the effect. You can say also this as it is the effect of push or pull on the object. But listen one thing, now definition is not completed. Now listen how, because to perform push or pull on the object, इसको push या pull करने के लिए मुझे किसी और object की भी तो जरूरत होगी ना। Okay, now you write the object by interaction due to another object. Suppose this is the book, this is the copy, and I want to make it move. Beta, another object is needed also. Okay, to make it move. Suppose car is moving. Suppose initially car was at rest. Now car is moving. Which object is pushing the car? Engine. Okay, and who is working on engine? We are working on the engine. Means to push a object, to push an object, and another object is needed. Interaction of another object is also needed. Okay, fine, I will tell you in detail. Listen how it is just effect of push or pull on the object by interaction due to another object. Clear? Fine. Now the examples of force, tell me, if I ask you examples of force, but I am telling you the example. You can write by yourself also. Listen, I am standing outside, okay, or I am sitting in the room. Fan is working, fan is rotating. Suppose, okay, then I feel cold. मुझे ऐसा लग रहा है हवा लग रही है मुझे, because बेटा air inside the room is pushed by the fan of the by hands of the fan. The air inside the room is pushed by the hands of the fan. And that moving air strikes on my body. Why the air moves? Due to force by the hands of the fan. Clear? Suppose in the road accident a truck strikes on the car. Okay, अगर कार कोई रुकी हुई है, कोई ट्रक उससे टकरा गया, then what happens? The car starts moving because ट्रक ने कार के ऊपर क्या लगा दिया, पुश और पुल लगा दिया। और इस रूम में जो हवा लगी थी उसमें पुश किसने लगाया, फैन ने। किसके ऊपर लगाया, एयर के ऊपर। क्लियर, फाइनल। ओके, नाउ लिसन, सपोज आउटसाइड एयर इज मूविंग, विंड इज मूविंग, एयर इज मूविंग एंड द a paper is lying there on the table outside, then paper starts flying. Why? Because air pushes the paper to fly. Clear? Air applies the force. फोर्स किसके ऊपर लगा बेटा, पुश और पुल किसके ऊपर लगा, पेपर के ऊपर। मैंने कहा था पुश और पुल के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए, किसके ऊपर लगा पुश और पुल, पेपर के ऊपर। लगाया किसने, एयर ने। इन द केस ऑफ रूम पुश और पुल किसके ऊपर लगा, एयर के ऊपर। लगाया किसने, फैन ने। इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट पुश और पुल बेटा किसके ऊपर लगा, कार के ऊपर। लगाया किसने बेटा, ट्रक ने। क्लियर? सो the force on any object needs interaction of any other object. Clear? Final. So many changes are there which are performed by the forces, and we will discuss it later on also. Okay, so many examples you can write by yourself. Okay, examples of force. Clear? A car is at rest. Okay, when we start the engine and engine pushes the car, तो रुकी हुई कार चल पड़ी, चलती हुई कार रुक भी जाती है, फोर्स लगता है ब्रेक की, ब्रेक जो ब्रेक होता है वो अंदर से कॉन्टैक्ट पे आता है तो फोर्स लगाता है. ओके, सो मैनी एग्जांपल्स वी कैन राइट बाय आवरसेल्व्स. Okay, so this is force and you have to write 4 to 5 examples in your common life. Okay, so many examples are there. Clear?
नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज देयर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Types of forces. Beta, you know of how many types forces are there? Forces are of beta two types. Forces are of two types. One is contact forces. बेटा टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्सेस? बेटा अभी मैंने आपको एक बात कही थी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर को में चेंज लाने के लिए, मैकेनिकल चेंज लाने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा? फोर्स लगाते हैं। फोर्स जरूरी होता है मैकेनिकल चेंज के लिए, ठीक है बेटा? तो इसके ऊपर बेटा क्या है? फोर्स लगना क्या है बेटा? जरूरी है। क्लियर? अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा बेटा, और मैंने कहा था फोर्स लगाने के लिए किसी और ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन की जरूरत है, कहा था मैंने। अगर ये इंटरेक्शन टच के रूप में हो, ये इंटरेक्शन टच की वजह से हो, तो फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा ना वो कौन सा होगा बेटा? कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ओके? और अगर ये इंटरेक्शन विदाउट टच भी हो जाए, विदाउट टच हो जाए, तो फिर इसके ऊपर जो फोर्स होगा ना वो कैसा होगा बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट होगा। ओके? मीन्स इफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नीड्स टच एज कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, then we say that force on this object is contact force. Clear? Listen, if force on an object needs touch for interaction with another object, अगर किसी फोर्स को इंटरेक्शन के लिए टच की जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था इसके ऊपर मैं फोर्स लगाना चाहता हूं और इसके लिए मुझे दूसरे की जरूरत है, और अगर इसको मूव करने के लिए जो मुझे फोर्स चाहिए वो फोर्स केवल तभी आएगा जब ये इसके टच में हो, तो मैं कहूँगा कि जो इसके ऊपर फोर्स लगा है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है इसकी वजह से। अगर मैं कहूँगा कि इसको मैंने मूव करवाना है और मुझे जो मैं फोर्स चाहता हूँ ना उसके लिए कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, वो बिना कॉन्टैक्ट के भी हो जाएगा, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ओके? नाउ इफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट नीड्स टच फॉर इंटरेक्शन विद द अनदर ऑब्जेक्ट, देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्लियर? एग्जाम्पल बेटा, examples, there are 2 or 3 examples I can tell you now of contact forces. Examples, friction force, okay, comma, tension, comma, normal reaction. Beta listen, you have to only remember the name, you have to only remind the name of these forces: friction force, tension और normal reaction. ओके? आपको इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ सबके बारे में बेटा। नाउ लिसन, फ्रिक्शन फोर्स। बेटा लिसन, व्हेन डज फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स? सपोज आई थ्रो द बॉल इन दिस वे ऑन द ग्राउंड, देन यू एवरीवन नो आफ्टर सम टाइम बॉल स्टॉप्स। सपोज this is road, if I throw an object in this way, after some time the object will stop. तो मैकेनिकल चेंज आ गया ना, चलती हुई बॉडी क्या हो गई बेटा? रुक गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा क्या लग गया? एक फोर्स लग गया। मैंने कहा था रुकी बॉडी चले, चलती बॉडी रुक जाए, तो इसके ऊपर बेटा क्या हुआ? एक फोर्स लग गया बॉडी के ऊपर, फोर्स लग गया बेटा। वो फोर्स क्यों लगा? बिकॉज देखो इसकी फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। कौन लगा रहा है? ग्राउंड, क्योंकि फोर्स लगाने वाला भी तो कोई चाहिए। मैंने कहा था
अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना है तो उसको फोर्स लगाने वाला जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ग्राउंड। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, फोर्स इसके ऊपर लगा, किसकी इंटरेक्शन की वजह से? इसकी इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लग गया। और इसके लिए कॉन्टैक्ट का होना क्या है? जरूरी है। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा ना जब दोनों में कॉन्टैक्ट हो, विदाउट कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन फोर्स काम ही नहीं करेगा। ओके, because force acting on this is due to the contact of this body and this body, this surface ये भी तो बॉडी है। ओके, so friction force requires contact between the two objects. Okay, next is tension. बेटा you know what do you mean by tension? TENSION. बेटा टेंशन in हिंदी we can say खिंचाव। Suppose एक रस्सी है बेटा, रोप है, रोप रस्सी। ओके, सपोज इट इज टाइड ऑन दिस साइड एंड इफ वी पुल इट ऑन दिस साइड देन व्हाट विल हैपन बेटा? द रोप बिकम टाइट। ओके, खिंचाव आ जाता है रस्सी में। ओके, व्हाई? बिकॉज देयर आर मैनी पार्टिकल्स ऑन द रोप। दिस पार्टिकल अट्रैक्ट्स दिस पार्टिकल अट्रैक्ट्स दिस पार्टिकल अट्रैक्ट्स दिस। इन दिस वे a tightness arise in the rope. This tightness refers to as tension. क्योंकि बेटा एक बात बताएं, ये टाइट किसकी वजह से हुई? फोर्स की वजह से। और जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो उसकी टाइटनेस को भी अंदर एक मीनिंग दे दिया गया, टेंशन। ओके, और ये टाइट क्यों हुई? क्योंकि सभी मॉलिक्यूल आपस में किस में हैं? टच में हैं। और एक बात बताएं बेटा, अगर रस्सी को मैं यहाँ से तोड़ दूँ, काट दूँ, सॉरी, अगर मैं रस्सी को यहाँ से काट दूँ तो बेटा क्या होगा? क्या ये टाइट होगा इधर से? ये टाइट नहीं होगा क्योंकि कॉन्टैक्ट छूट गया। तो टाइटनेस होने के लिए बेटा कॉन्टैक्ट का होना क्या है? जरूरी है। सो टेंशन मीन्स टाइटनेस इन द रोप एंड टाइटनेस इन द रोप रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन द पॉइंट्स, कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। क्लियर? दिस इज टेंशन। थर्ड इज बेटा नॉर्मल रिएक्शन। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, normal reaction. Beta, what do you mean by normal reaction? You know, a very important thing. Suppose this is ground and a person is standing on the ground. Suppose a person is standing on the ground. Listen. Then beta, on the ground, due to his mass, on the ground, force is acting out. ओके, फोर्स बेटा अगर हम ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं ना तो हमारी वजह से ग्राउंड के ऊपर क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है। अगर मेरे सिर के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है तो मुझे पेन होगा ना, थोड़ा मुझे ऐसा महसूस मैं अनकंफर्टेबल महसूस करूँगा ना। क्यों? उस बॉक्स की वजह से मेरे ऊपर क्या लग रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है। ओके, और ये आपको सारी बातें मैं बताऊँगा कि फोर्स क्यों लग रहा है, धीरे धीरे ये बातें आगे आएंगी। ओके, नाउ ड्यू टू दिस मैन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस। फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड। बेटा एक बात बताऊं, इफ ड्यू टू दिस मैन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, द सेम फोर्स ग्राउंड इज अप्लाइंग ऑन द मैन ऑल्सो। मैं जितना, मेरी वजह से जितना फोर्स बेटा ग्राउंड पे लगा हुआ है ना, तो ग्राउंड उतना ही फोर्स से मुझे रिएक्शन दे देती है, मुझे उठा के रखा हुआ है। न्यूटन हैज सेड दैट इन हिज थर्ड लॉ that every action has an equal and opposite reaction. How much force due to this man on the ground, the same force the ground applies on the man also, and this is called normal reaction. This is action, this is reaction. And why this is called normal? Because it is 90 degree to the surface. 90 degree to the surface. It is normal reaction. Now listen one thing, ये देर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन मैन एंड द ग्राउंड। मैन और ग्राउंड में कॉन्टैक्ट है तभी तो ये फोर्स आया ना। अगर ऐसा हो, दिस इज ग्राउंड, दिस इज मैन, इफ कॉन्टैक्ट इज नॉट देयर देन बेटा अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है तो इस मैन की वजह से ग्राउंड के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर आदमी स्पोर्ट थोड़ा ऊपर उठ गया, ओके, तो फिर ग्राउंड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मेरे ऊपर कोई बॉक्स पड़ा है और कोई आके बॉक्स को थोड़ा ऊपर उठा दे ऐसे, तो मेरे ऊपर उस बॉक्स की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये आदमी को कोई ऊपर उठा दे तो इस आदमी की वजह से ग्राउंड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा।
और अगर आदमी की वजह से ग्राउंड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा तो बेटा ग्राउंड आदमी को नॉर्मल रिएक्शन कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। मीन्स नॉर्मल रिएक्शन, फॉर नॉर्मल रिएक्शन contact between two objects should be there. Okay, now okay, I am asking one question. This is action, this is reaction. Now tell me one thing, action is also force, reaction is also force. Now tell me, in case of action फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ग्राउंड के ऊपर। किसकी वजह से? मैन की वजह से। एंड इन केस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ये भी एक फोर्स है। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? मैन के ऊपर। और किसकी वजह से लग रहा है? ग्राउंड की वजह से लग रहा है। ओके, वी विल ऑल्सो डिस्कस दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल इन न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। क्लियर ऑल्सो? Okay, so these are the examples of contact forces. You have to only remember the name of these: frictional force, tension and normal reaction, and all these require touch with any other object. Okay, these forces require touch with another objects. Clear? Now beta, next is non-contact forces. This is contact force. Now second is non-contact force. Non-contact. Now changes we can do here. Non-contact force is a force on an object does not need any touch for interaction with another object. ओके बेटा, अगर किसी फोर्स, सपोज एक मिनट बाद सुनिए, इफ वी वांट दैट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन दिस, एक ऐसा फोर्स जो किसी और की वजह से लगेगा और वो ऐसा फोर्स लगेगा कि इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, देन वी से दैट दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, टच की जरूरत नहीं है तो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, नाउ बेटा टेल मी वन थिंग, बेटा you can say it as touch, you can say it as physical touch also. Okay, physical touch also you can say. Clear? Now beta examples. Beta you everyone know examples like gravitational force, second magnetic force, third electrostatic force, you have to only remember these names and listen example how are they working. Listen, gravitational force, suppose beta this is ground, earth, and you know earth is attracting everything towards itself. Suppose this is chalk, if I leave the chalk then it will go towards the earth. Why? Because earth is attracting this. और बेटा अर्थ के साथ इसका टच तो नहीं है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो अर्थ के साथ इसका टच नहीं है, बट इवन देन इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. मीन्स अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस, अर्थ इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस. बेटा दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, एक तो ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और दूसरा कौन सा, अर्थ, जिसकी वजह से इंटरेक्शन हो रहा है, फोर्स लग रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट डज नॉट नीड एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, एनी फिजिकल टच. क्लियर? दिस इज मैग्नेटिक फोर्स. यू एवरीवन नो, when a north pole of magnet is brought near the north pole without any touch, they will repel each other. Okay, and when north pole of a magnet is brought towards the south pole of any another magnet, then they will attract each other without any physical contact with each other. Clear? Third is electrostatic force. But in plus 2 class you will study these type of forces very in very detail. What type of force this is, you know? Similarly in magnetic case, if two positive charges are there
तो सो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, क्लियर, दिस चार्ज एक्ट्स फोर्स ऑन दिस एंड दिस चार्ज ऑन दिस, clear, final. So this is the electrostatic force. So these are the non-contact forces, clear. So contact forces for which physical touch is required between the objects for interaction, and second one is non-contact in which physical contact is not required for the object, between the objects, okay, for the force, clear. Now this is the, now beta नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हो गया कि फोर्स दो तरीके का हो सकता है, या तो टच वाला हो सकता है या बिना टच वाला, या दो ऑब्जेक्ट के बीच में टच हो तभी लगे या बिना टच के भी लग जाए. तो हम क्या कहते हैं बेटा, वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो फोर्स लग गया, अब ये हो गया कि फोर्स लग गया, या तो कॉन्टैक्ट होगा या नॉन कॉन्टैक्ट होगा, फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, ओके. अब करते हैं फोर्स कर क्या क्या सकता है, व्हाट कैन अ फोर्स डू. नेक्स्ट पॉइंट इज what can a force do. What can a force do? Beta, force can do many changes, because I have told you earlier that some mechanical changes are there. For mechanical changes which is required beta, force is required, clear. Now listen. First, tell me, it can change the speed of body. It can change the बेटा स्पीड ऑफ बॉडी. ये बेटा बॉडी की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है. इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, क्लियर, फाइनल. बेटा लिसन, नाउ लिसन वन थिंग. आई हैव टोल्ड यू इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. नाउ इन दिस पॉइंट देर आर two points. Listen, a part, it can move the stationary object, रुके हुए ऑब्जेक्ट को अगर चलाएंगे तो स्पीड चेंज होगी ना. पहले स्पीड कितनी थी, 0, और स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, ओके. इट कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. सेकेंड, it can stop the both are same thing as it can change the speed of object, okay. It can change the speed of object, clear, final. Second thing, it can change the direction of motion of object. It can change the direction of motion of object, okay. अब suppose we are riding the bike or we are driving the car, suppose, okay. If we can turn on left also, we can turn on right also, so it can change the direction of motion of object. अगर हमने बेटा लेफ्ट की तरफ टर्न किया, okay, it means internally the forces on the car turns it on the left or in the right, etc, okay, final. Third beta, third, tell me beta, what will be third? Third will be it can change
It can change the shape and size of object. Shape of object. And last point, it can change size of object. It can change size of object. Clear? So it can change the speed of object. और स्पीड में ये दोनों बातें आ जाएंगी बेटा. It can move the stationary object. It can stop the moving object. Second is it can change the direction of motion of object. Okay. Third is it can change the shape of object. And last is it can change the size of object. अब बेटा मेरी बात गौर से सुने, जो बहुत जरूरी है. बात गौर से सुने. I have written can. Why can? कैन क्यों लिखा? क्या ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स इनको चेंज ना करे? मेरी बात अब गौर से सुनना बेटा. आई हैव रिटन इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. मैंने कहा इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. जरूरी तो नहीं है ना बेटा कि फोर्स हमेशा, क्या पता मैं फोर्स लगाऊं और स्पीड चेंज ना हो. देखो कैसे, मेरी बात गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनिए. इफ कार इज मूविंग, मैं सपोज इफ अ टॉय इज मूविंग, टॉय एक खिलौना चल रहा है ऐसे, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, हो सकता है उसकी स्पीड में चेंज ना हो. क्यों? हो सकता है मैंने फोर्स ऐसे लगाया कि उसकी केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए. जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाया कि स्पीड ही चेंज होगी, हो सकता है मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए. ओके सुनिए, यहां पे कैन क्यों लगाया? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. हो सकता है मैं फोर्स ऐसे लगाऊं कि डायरेक्शन चेंज ना हो. कैसे? आई एम राइडिंग द बाइसाइकिल एंड द फोर्स ऑन द इंजन आई हैव इंक्रीज्ड एंड द फोर्स इज सच दैट द बाइक मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन. डायरेक्शन चेंज ना हो, क्या पता स्पीड चेंज हो. स्पीड चेंज ना हो, क्या पता डायरेक्शन चेंज हो. तो कंफर्म तो नहीं है ना कि फोर्स लगाने से स्पीड चेंज होगी, या ये कंफर्म तो नहीं है ना कि फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज होगी. कंफर्म तो नहीं है ना. सो कैन आया, कैन. लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर स्पीड चेंज हुई है ना तो कंफर्म फोर्स लगा है. डायरेक्शन चेंज हुई है ना तो कंफर्म फोर्स लगा है. मेरी बात दोबारा सुनिए, अगर फोर्स लगा है तो जरूरी नहीं है कि स्पीड चेंज हुई है. लेकिन अगर स्पीड चेंज हुई है ना तो ये जरूरी है कि उसके ऊपर फोर्स लगा है. दूसरी बात, फोर्स लगा है तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है. लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है ना तो ये पक्का है कि उसके ऊपर फोर्स लगा है. नाउ लिसन, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं फोर्स लगाऊं लेकिन शेप चेंज ना हो सकता है. कैसे? ए रिजिड बॉडी इज देयर, एक पत्थर है, पत्थर को मैं दबाऊंगा उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन फोर्स तो लगा रहा हूं ना. लेकिन अगर शेप चेंज हो गई ना तो ये पक्का कि फोर्स लगा है. देखो, फोर्स लगा है तो ये जरूरी नहीं है कि शेप चेंज होगी, बट अगर शेप चेंज हुई है ना तो ये कंफर्म है कि फोर्स लगा है. सिमिलरली इन दिस वे, फोर्स लगा है तो जरूरी नहीं है कि साइज चेंज होगा, बट इफ साइज इज चेंज देन इट इज कंफर्म दैट फोर्स इज ऑन देयर. Clear? So I have written can in this way. Clear? So these are the functions a force can do. Okay? Beta, this chapter is very important, and in this chapter we will do many numericals also. Okay? Very important numericals this chapter is having. If you have any problem in understanding this chapter, beta, then ask me in your WhatsApp group. Okay? Fine. Today this is the theory only. Okay? And you have to read your chapter in your NCERT till what can a force do. यहाँ तक आपको अपने आप एक बार पढ़ना है. ओके? और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा. क्लियर? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन योर WhatsApp group. ओके बेटा? थैंक यू वेरी मच.